passing the freezing point of the solution itself. Okay, so right, I'm writing the formula if any one of you don't know. So so Kf is equal to RTF square divided by delta heat of fusion into 1000. ओके, तो इसमें यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, जो आर की यूनिट आप रखेंगे, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन दैट टर्म्स ओनली. Use this formula to find the value of Kf. So let's try to solve it. So Kf, so the value of latent heat of fusion is being given in calories per gram. So let's put the value of R in calories. Okay, calories per Kelvin mole वाली value रख देते हैं, that is 2. And Tf, freezing point of water, so converted into Kelvin, तो 0 डिग्री से हो जाएगा 273 Kelvin. Okay, and delta heat of fusion, so delta heat of fusion given 80 calorie per gram. So while this R value is in calorie per mole Kelvin, so you have to calculate, convert this also mole. So 80 calorie per gram, तो पर मोल कितना हुआ, 80 इंटू 12 कैलोरी पर मोल, राइट, और इंटू 1000 आई गेस. तो यहाँ पे m सॉल्वेंट भी होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट. सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 18 ऑब्वियसली. ओ सॉरी, यहाँ पे भी 18 होगा, वी हैव वाटर. सो यहाँ से Kf की वैल्यू आ जाएगी. ओके निश्चय, आई एम डूइंग इट, वी विल चेक द आंसर correspondingly. Let me solve it. ये आ जाएगा 1.86. and let's solve. Delta Tf will be mkf obviously. So m की value, let's put 1.86 kf, and m will be obviously 7.45 is the weight of solute. So number of moles will be molecular weight, so 74.5, and divided by weight of solvent, that is 500 grams. और kg में कर देंगे इसको सॉल्व करते हैं. and obviously you have this degree of dissociation is 95%. KCl will give out 2 ions, so we have to multiply it by 1 plus alpha, right? So into 1 plus alpha और 1.95. तो ये आना चाहिए, लेट मी जस्ट सॉल्व इट, ये आएगा 0.73 डिग्री सेल्सियस. ओके, यस ऑब्वियसली निश्चय, वेरी गुड, इट्स ए ऑप्शन इज करेक्ट. तो ये अल्फा की वैल्यू कहाँ से आई, आई की वैल्यू, आई इज इक्वल टू 1 plus n minus 1 into alpha. So 1 plus n is 2 because KCl dissociates into 2 ions. 2 minus 1 into alpha. So I is equal to 1 plus alpha or 1 plus 0.95. It comes down as 1.95. ठीक है, तो वो यहाँ पर रख देंगे आई एम के एफ. तो यहाँ से डेल्टा टी एफ आ जाएगा, और डेल्टा टी एफ आ जाएगा तो ऑब्वियसली जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा न्यू, दैट विल बी टी एफ माइनस delta TF. So 0 minus 0.73, it will come out as minus 0.73 degrees Celsius. So obviously A option is correct. Do it, or any doubts are there, please ask.
Is it clear? Nishya already got the answer. Yash and Kanish. Very good. Kanish, did you understand this? Can we move on to the next one? Okay, fine. Let's go. So this is your next question. A non-ideal solution was prepared by mixing 30 ml of chloroform and 50 ml acetone. So you have to tell the volume of mixing will be, okay? What will be the volume of the resultant mixture? You have to tell us. Easy question. Give it a minute and tell the answer. Someone is answering, I guess. Nishya is saying C part. Nishya, can you please tell the reason for it? Due to negative deviation. Negative deviation from what? From ideal solution. ठीक है. So you should say negative deviation from Raoult's law actually. So ठीक है. Ideal solution से negative deviation है. That means when we talk about negative deviation, इसकी characteristics क्या है कि if we got two A and B as solute and solvents or whatever, so the AB bonds are more likely to form. मतलब कि AB bond का AB bond या फिर AB interactions are more feasible. ठीक है, as compared to AA or BB interactions. So this is the particular characteristics of negative deviation. So in negative deviation you have delta V of mixing less than 0. Okay, so obviously volume of mixture minus volume of initial volume, you can say, or volume initial will be less than 0. So volume of mixture will obviously be less than initial volume, or initial volume we have 50 ml acetone plus 30 ml chloroform. So obviously volume of mixture will be less than 80 ml for this particular case. ठीक है, इजी वो क्वेश्चन. सेम केस होगा हमारा फिनॉल प्लस एनिलीन अगर ले लिया जाए, दे आल्सो फॉर्म नेगेटिव डेविएशन. अगर हम लोग 40 ml फिनॉल एंड 40 ml एनिलीन लेते हैं तो रिजल्टेंट मिक्सचर विल बी ऑब्वियसली लेस देन 80 ml इन दैट केस आल्सो, because they also do negative deviation. So if we talk about more examples, so phenol plus aniline can be one who do negative deviation. ठीक है, समझ में आ गया? Any doubts please ask. Okay fine. Yes, समझ में आ गया? Yeah, yes, of absolute correct.
कोई भी इंटरेक्शन होगा, कोई भी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे between the two, so that will lead to obviously negative deviation from the roll flow. Yeah, let's move on to the next one. So now it is asking that what will be the molecular weight of CaCl2 determined in its aqueous solution. So CaCl2 solute in its aqueous solution experimentally from the depression of freezing point. ठीक है. So as you all know कि the colligative properties, they are useful for determining the molecular weight of different compounds. That is one of their uses. So उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है कि एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड जो मोलिकुलर वेट होगा CaCl2 का, the experimentally defined molecular weight of CaCl2, what will be the case? Will it be equal to 111, less than 111, greater than, or is the data insufficient? Think about it. Use the concept of want of factor and try to answer it. It will be we will check this one. Let us start. Yash and Ganesh, please do answer quickly. जो भी लग रहा है. Yash is in C, I guess. Okay, fine. Okay, so want of factor क्या होगा in this very particular case? That will be 3 ना. So want of factor 3 है. And there is a very simple relationship between want of factor and molar mass of solutes. Have you heard about it? So this is the relation. So want of factor is equal to theoretical molar mass divided by observed molar mass. Okay, so this is the formula, or you can say relation of want of factor to the molecular weights of solutes. तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं. So I will be equal to m theoretical. You can find the molecular weight of CaCl2. It will be 71 of chlorine. So it will be 111. ठीक है. So 111 divided by m observed. ठीक है. And I value you know. So that shows that m observed will be 111 upon I, or 111 upon 3 in this case. So obviously it is less than 111. So B part is correct. ठीक है. So this was a useful formula here. I have not fully done this chapter in theory yet as I joined late.
So I won't be able to answer question, but I'm able to understand them as you solve. Okay, fine, Kanish. That's okay, but you do try to answer as well. गलत होगा कोई नहीं, लेकिन इससे doubts follow. So obviously this is the formula that we use. Relationship of van 't Hoff factor with molar masses. Okay. अब ये फॉर्म आया है तो let's just revise quickly one more formula for this that can be used in other. So in terms of moles, the van 't Hoff factor is n observed number of moles divided by n theoretical number of moles. ठीक है. N observed, like take example of CaCl2. So 1 or Cl2 say 2. So the observed number of moles will be 3, while theoretical, if we don't consider it van 't Hoff, it will be 1, just 1 CaCl2 mole. So theoretical 1 है and observed 3 है. So that's how the value of I is 3 here. Or and you know that number of moles is mass upon molecular mass. तो ये अगर आप यहाँ पर पुट कर देते हैं तो you get the inverted, that is molecular mass of theoretical divided by molecular mass of observed. तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया है, रिलेशन बिटवीन van 't Hoff factor and molecular mass of solute. So that's how it is done. Yes and निश्चय, any question? कनिष्क, कोई डाउट है? Okay, fine. Let's move on to the next one quickly. This is our question. The partition coefficient of solute in between immiscible liquid and in favor of A is 10. Okay, and they are asking the partition coefficient in favor of B. The simple one line question it is. Partition coefficient का फॉर्मूला लगाइए in favor of B and find the values. So if we have two immiscible liquid and we drop some solute in it, हमारे पास दो immiscible liquid होते हैं एक साथ and we उसमें we add solute, so there is a particular ratio जिसमें वो distribute होते हैं. That ratio it terms at partition coefficient. Okay. So that ratio is called partition coefficient. It is equal to the ratio of solutes in both the immiscible liquid, concentration of solutes in both the liquids. ठीक है, तो उसको यूज करो. तो मान लो कि we have two liquids A and B, they are immiscible. Okay, तो हमेशा ही बाउंड्री लेयर रहेगी and you add some solute, तो obviously they redistribute हो जाता है solute and there is some concentration of solute in A while there is some in B side. So the term Ca by Cb, concentration of solute in A divided by concentration of solute in B, this is terms at partition coefficient in favor of A. ठीक है, and it is given as 10. तो जो सॉल्यूट ऊपर रखा जाएगा उसको बोलते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट इन फेवर ऑफ ए. ओके,
That's how you remember it. And they are asking to find the partition coefficient in favor of B. In favor of B. So that will obviously be CB by CA because it is in favor of B. So it will obviously be 1 upon CA by CB or 1 by 10 or 0.1. So which option? A option is correct. Okay, कोई doubt है? Have you ever heard about this partition coefficient before in classes or? Okay, when you have these two immiscible liquid, let me explain. तो जब आपके पास दो इमिक्सिबल लिक्विड होते हैं, सपोज ए एंड बी, दे कांट बी मिक्स विद ईच अदर, तो ऑब्वियसली दे विल फॉर्म लेयर्स, एक दूसरे के ऊपर लेयर बना के रहेंगे, वाटर एंड ऑयल लेट से, ठीक है, एंड यू ड्रॉप सम सॉल्यूट इन इट, तो जो तो दैट सॉल्यूट व्हाट इट डज, इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ इन बोथ द सॉल्वेंट, तो उसके लिए दो सॉल्वेंट्स हो गए ना, एक हो गया सॉल्वेंट ए एंड सॉल्वेंट बी, अगर ये दोनों मिक्सिबल होते तो एक नया सॉल्वेंट बन जाता ए प्लस बी, उसमें सॉल्यूट जाता और हम लोग कंसंट्रेशन निकाल सकते थे, बट सिंस दे आर इमिक्सिबल ए एंड बी रिमेन टुगेदर एज अ लेयर, तो जब सॉल्यूट ऐड करते हैं सम ऑफ द कंसंट्रेशन goes to A liquid while the other part of the solute goes to B liquid, तो कुछ पार्ट A में गया कुछ पार्ट B में गया, so that's why there are different concentrations with respect to both the liquids. A में जितना solute गया उस corresponding to that there is Ca concentration of solute in that part, Cb is the concentration of solute in liquid B, तो Ca upon Cb ratio is termed as this partition coefficient. और अगर हम और इन फेवर वो बोलने का कुछ दैट इज जस्ट टर्मिनोलॉजी, तो इन फेवर ऑफ ए बोलते हैं तो वी कीप द कंसिडरेशन ऑफ ए इन द न्यूमरेटर, और इन फेवर ऑफ बी बोलते हैं तो वी कीप द कंसिडरेशन ऑफ बी इन द न्यूमरेटर, दैट्स हाउ यू रिमेंबर इट. और पार्टीशन कोएफिशिएंट होता क्या है, इफ इट इज अ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन टू डिफरेंट इनटू इनमिक्सेबल लिक्विड्स, यू कैन से. ठीक है, समझ में आ गया. Did you get this? Okay, fine. So let's move on to the next one quickly. So this question is given that you have to calculate the boiling point of a solution containing 0.61 gram of benzoic acid in 50 grams of carbon disulfide, assuming 84% dimerization. So here degree of association will be considered, क्योंकि dimer formation हो रहा है. The boiling and Kb, boiling point दिया गया है और Kb value दी गई है, and you have to, what you have to find, the boiling point of the solution you have to find. Simple formula based question, and delta Tb is equal to I into m into Kb. You have to form the value, find the value of I first, want of factor की value निकालिए using that 84% dimerization thing. Once the value of I is known, simple है. I want the answers from you quickly under 5 minutes. Using this degree of association given, that is 84%, find the value of I. और I की value once you know, delta TB is equal to I KB and into molarity. ठीक है, molarity के लिए आपको weight of solute is given, weight of solvent is given, everything else is just given, you have to just put it in the formula and tell the answer. Do it quickly.
I want the answers from everyone. Yash and Nishya, quickly answers, please. Everyone match the value of for I. I is 0.58. This will be the value for want of factor. ये match कर लीजिए and then find the value of delta TB quickly and ultimately new boiling point of the solution. This is ये. Okay, let's do it quickly. कुछ है नहीं question में. So we are talking about dimerization of benzoic acid. So C6H5 COH के दो मॉलिक्यूल के डायमराइज to form this. So obviously the want of factor will be 1 minus alpha by 2. Putting the values 1 minus 84%, so 0.84 by 2, that comes out as 0.58. Want of factor आ गया आपको. Then you find delta TB. Then you find delta TB is equal to I into KB into M. I is 0.58. KB is given what KB कितना है 2.3. Molality, let's do it. So weight of solute is 0.61 divided by mass of solute. So it is a molar mass of solute into solvent का mass कितना है 50. So उसको kg में convert करेंगे. ठीक है. That's all. So delta TB will be 0.1334 and the final boiling point, that's a new boiling point, TB dash will be elevation होता है तो initial TB plus delta TB. We put the values there. 46.2 degrees Celsius plus 0.1334. It comes down at 46.33 degrees Celsius. Okay. So simple question. I hope not there is any doubt. Yes, clear है ना? Clear ही होगा. Easy था question. Let's move on. So this is our next one. FeCl3 on reaction with K4FeCl6. ठीक है. Aqueous solution में gives blue color. ठीक है. ये रिएक्शन बता दी इन्होंने कि FeCl3 की रिएक्शन K4FeCl6 से होती है तो ब्लू कलर मिलता है सॉल्यूशन ऑब्वियसली. And now they are telling that these are separated by a semi-permeable membrane AB as shown. ठीक है. Let's look at this diagram. One side it is K4FeCl6 and the other side it is FeCl3. तो यहाँ पर K3 कर लीजिए. K3FeCl6. That's all, no problem. So एक side K3FeCl6 है and on the other side there is FeCl3. Different concentration 0.1 m and here it is 0.01 m. This side X, this is side Y. और ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन होता है ब्लू कलर कंपाउंड का. Now you have to tell me कि which side of this container will the blue color emerge. Okay. तो ब्लू कलर फॉर्मेशन किस साइड होगा regarding this particular reaction. Okay, quickly think about it. Osmotic pressure पढ़ा होगा. उस टाइम आपने ये सेमी परमिएबल पढ़ा होगा. So try to remember that theory and think about answering it. कि साइड Y वाले साइड ब्लू कलर फॉर्मेशन होगा. Will it be side X? Will it be both the sides or none of the sides? Think about it and try to answer.
Yes, you think A. Uh, Nischay Singh A. Okay. Okay, fine. We will check this. Can you please tell the reasons? Nischay Singh. रीजन भी बताइए साथ में so that we can expand our thoughts for them. Whatever you are thinking. Pi is equal to CRT. Okay, yes. How will that help? C is larger. Okay. Concentration is larger on K3 efficiency side side जाता है according to you. Okay. Because osmotic pressure is on side X. Okay. और try to think about it. यही था क्या? क्या solute mol reaction होने के लिए what you actually need? Ions का interaction चाहिए ना? Fe plus ions cyanide ion से react करेंगे. You need some ionic interactions, right? तो do you think semi permeable membrane के through ions travel करते हैं? Do they travel? Just think about it. Because I don't think so. Okay, so let's discuss it. So all of you are talking about this कि higher concentration to lower concentration होगा osmotic pressure के through semi permeable membrane में. Okay, that is all right. But there is one thing. There is transfer of solvent only. Okay, सिर्फ solvent का ट्रांसफर होता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, तो इसमें क्या आयंस होंगे? देयर विल बी देयर विल बी पोटेशियम आयंस होंगे इसमें, साइनाइड आयंस होंगे, Fe3+ आयंस होंगे. ठीक है. एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस. हेयर Fe3+ आयंस होंगे, क्लोराइड आयन होंगे. तो एक्चुअली डू सम रिएक्शन बिटवीन दीज आयंस. इन दोनों को कांटेक्ट में आना पड़ेगा. दिस इज अवर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है. तो अब जब तक ये आयंस एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, देयर वोंट बी एनी रिएक्शन, so there won't be any blue color formation. And semi permeable membrane के through there is all only and only transfer of solvent only. No transfer of solute takes place. That you should remember. No transfer of solute takes place. तो अगर आपने एक साइड वाटर में शुगर डाल रखा है, नेक्स्ट साइड सॉल्ट ले रखा है, तो सिर्फ वाटर डिस्चार्ज होता है. शुगर मॉलिक्यूल सॉल्ट मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते कभी. दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो नो ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस. तो अब कभी सॉल्यूट्स क्या है यहाँ पर? ऑब्वियसली दीज आयंस, राइट. तो ये जब ट्रांसफर होंगे ही नहीं इन दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, so how will they even interact? So there won't be any reaction at all. So that's why there will be blue color formation on none of the sides. ठीक है. So option D is correct. ठीक है. So ask if any doubts are there. There is only and only transfer of solvent there through the semi permeable membrane. ये आपने मिस कर दिया होगा ड्यूरिंग स्टडीज. सॉल्यूट तो वही रहेंगे जिस साइड वो हैं. हाउ विल दे इवन इंटरेक्ट? ठीक है. यस. एंड ओवर तनिष निश्चय, डिड यू गेट दिस? Okay, fine. Let's can we move on to the next one? Let's quickly do it. So this is a similar question. So to get color on one side,
what should we replace with SPM with? So to get color on bushes, you just remove the SPM, I would say. Why you are replacing it? अगर आपको कलर ही चाहिए और किसी एक साइड कलर चाहिए तो आपको सेलेक्टिव कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि जिस आंसर रिएक्शन आप चाहते हैं वो। व्हाट इज योर क्वेश्चन? देयर कैन बी डिफरेंस योर क्वेश्चन की अगर आपको एक साइड कलर चाहिए ही चाहिए सो यू हैव टू ऑब्वियसली यूज सम फिल्टर्स राइट जो कि आयंस को जो आयंस चाहिए उनको एक साथ रख सके so there are some biological filters जो ions को filter कर देते हैं we can use them in place of semi permeable membrane that's how it can be achieved okay so do this one वो भी अभी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन वाला किया सेम टू सेम है 72.5 ग्राम ऑफ फिनॉल इज एक्चुअली जस्ट लीव इट फॉर राइट नाउ ये आप क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं सेम है जैसा अभी आपने पहले किया था टाइम बचा वी विल कम टू इट एट द वेरी लास्ट ओके लेट्स मूव ऑन टू दिस वन तो ये आप ही लोग करेंगे द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा of a weak electrolyte AXBY is related to want of factor. Just quickly, I want the answers. Salt को dissociate कराइए and find the value of I. Okay. Simple mathematics लगेगी यहाँ पर. Quickly do it. Okay. I think most of you will get this. जल्दी से कर देते हैं so that more questions can be done. So we have AX plus BY, right? तो ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा X A आयंस हैं और चार्ज कितना होगा Y plus obviously and there are Y number of B ions and charge obviously will be X plus ठीक है तो यही X minus सॉरी 9 होगा ये ठीक है so let's say initially we had 1 mole of this 0 mole of this 0 mole of this and degree of dissociation alpha assume कर लेते हैं तो 1 minus alpha remove हुआ तो X alpha form हुआ Y alpha form हुआ ठीक है so the number of ions क्या हो गए I is equal to 1 minus alpha plus X alpha plus Y alpha ठीक है तो I is equal to 1 minus alpha common so 1 minus X minus Y or you can say alpha is equal to I minus 1 divided by X plus Y minus 1 so which option alpha to I minus X plus Y minus 1 okay fine so option A is correct all of you were right ठीक है जल्दी से एक और करते हैं क्वेश्चन do this which of the following represents correctly the changes in thermodynamic properties during formation of 1 mole of an ideal binary solution ठीक है तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं यू हैव टू टेल तो तीन बेसिकली यहाँ पे कंसीडर करी गई हैं डेल्टा जी मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग एंड टी डेल्टा एस मिक्सिंग तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग एंड एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग how all the three get affected you have to tell और ideal binary solution का केस है हमारा we have the case of ideal solution ठीक है तो ideal solution है there won't be any deviation from the Raoult's law
पॉजिटिव नेगेटिव कोई डेविएशन नहीं होगा बिकॉज आइडियल सॉल्यूशन है, कोई डेविएशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली नॉट हैव नॉट डन दिस बट गेस इज सी। ओके सो लिसन टू मी, तो आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा एच मिक्सिंग विल ऑब्वियसली बी जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी जीरो। तो डेल्टा एच मिक्सिंग वाले जिसमें जीरो नहीं है यू कैन easily remove those option. So option I guess A and all the options are mentioned A here. I'm sorry. So this is A, B, C and D. Okay. Okay. So let's talk about this. It is ideal binary solution. ठीक है. तो ideal binary solution है that means delta H mixing is equal to 0, delta V mixing is equal to 0. तो delta H mixing वाले ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं. सो इन ऑप्शन ए डेल्टा एच मिक्सिंग इजंट जीरो, सो ये तो हो नहीं सकता. डेल्टा एच मिक्सिंग ये हो सकता है, ये हो सकता है एंड ये भी नहीं हो सकता. तो बी और सी में से कोई करेक्ट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेल्टा जी एंड डेल्टा एस. डेल्टा जी इज फ्री एनर्जी. तो कुछ कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म होने के लिए फ्री एनर्जी शुड ऑलवेज बी नेगेटिव, क्योंकि दिस ऑलवेज लीड्स टू स्टेबलाइजेशन. अगर किसी प्रोसेस में फ्री एनर्जी नेगेटिव नहीं है या वी कैन से फ्री एनर्जी पॉजिटिव है, so obviously that process will not be spontaneous, so process backward चला जाता है, doesn't take place. तो अगर डेल्टा z ग्रेटर देन जीरो है तो obviously solution बनेगा ही नहीं. and और all the natural processes tend toward increase in entropy. All the spontaneous processes lead toward increase in entropy. Okay, entropy increase होगी तभी solution बनेगा. सॉल्वेंट में आप सॉल्यूशन डालते हैं, एंट्रोपी इंक्रीज होती है. दिस इज नेचुरल फिनोमिना. सो डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, सो टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन जीरो. सो नाउ लेट्स क्विकली लुक कि डेल्टा जी किधर नेगेटिव है और डेल्टा टी डेल्टा एस कब पॉजिटिव है. तो टी डेल्टा एस पॉजिटिव है एंड डेल्टा जी मिक्सिंग will obviously be negative. So option C is correct. Okay. Yeah. Do you guys having some noise in the background? Should I fix it? Okay, fine. So option C will be correct. कोई डाउट है पूछो जल्दी से. डाउट है. निश्चय इट इज क्लियर. Okay, fine. So the next topic will be aldehyde ketone. So Kanish just said that he hadn't studied this whole chapter. So Kanish, have you studied aldehyde and ketones completely? Not even started. Okay. Okay, fine. Because actually the next topic we will be covering will be aldehyde and ketone, that is given to me. Okay, fine. We will meet you in the next class, that is tomorrow, with aldehyde and ketone question. Thank you everyone. Bye bye.